where Prime Minister was the chief guest. And one of my recommendation was the implementation of electronic health record in government hospitals across Very Pakistan. important. Right? अभी रिसेंटली हमने पाकिस्तान में आपने सुना होगा किर्गिस्तान में स्टूडेंट्स के साथ बहुत मसले हो रहे थे. किर्गिस्तान, आई हैव स्पेंट 3 years there. वहाँ पे 12,000 पाकिस्तानी बच्चे वहाँ पे मेडिकल एजुकेशन ले रहे हैं. And I really urge to all parents to double think before sending their kids to those type of places. और हम लोग केन्या में भी ऑपरेट करते हैं. केन्या में जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं 80 to 90% are from insurance companies, क्योंकि वो 80 to 90% पे होती है इंश्योरेंस के थ्रू. पाकिस्तान में जो पेशेंट्स आते हैं 80 to 90% कैश. Hello and Assalamu alaikum. Welcome to Smart Benefits Podcast. My name is Ayesha Tariq Seth and I'm the founder of Seth Learning and Company. Today we'll be exploring a very important topic on healthcare because healthcare is a fundamental basic human need for all of us. And that will be on how innovations in healthcare can actually improve our lives and our health. We have a very special guest on board with us, Mr. Shaukat Ali Khan. So अगर मैं एक nutshell में बोलूं तो he's this iconic figure who started his journey from Gilgit-Baltistan in the 90s, barely could use a computer, and now he represents Aga Khan University as a global chief information officer, and he leads ICT systems and services across Asia, Africa, and the UK. He has over 20 plus years of experience and he has delivered mission critical solutions in various industries. कुछ अगर मैं आपको highlights बताऊं शौकत साहब के, so he's been Pakistan's nominee for United Nations highest positions of Chief Information Technology Officer. He is an award winner of over 40 national and international awards across healthcare and technology. He's an author of a book. So we are very delighted to have him on board, and we would love to learn from his experiences how we can transform the healthcare ecosystem in Pakistan. So it's great to have you today, Mr. Shaukat. Thank you very much. Thank you for inviting me. So first, I would like to start with your personal story. You mentioned that you barely could use a computer in the 90s, and you were in one of these far-flung areas of Gilgit-Baltistan where internet accessibility is an issue. So how did you make this journey, and what was your key motivation or your driving passion, basically? Yeah, thank you very much. You mentioned barely use of internet. Actually, in 90s, that was the first time we saw internet there, right? And I was, of course, one of those blessed families where education was very important, especially for my father and my mother. That was the key. And through education in late 90s, when I was doing my bachelor's degrees search across, then my elder brother asked me to go into IT. At that time, I did not have any idea about what this information technology and all those things are. And when I entered to the university, it was even very difficult to start the computer. How to start and how to navigate the basic things. But then from there, I was blessed that I got some amazing opportunities in studying at some top institutions around the world. I did my master's from Sweden, from Blekinge Institute of Technology, and I did my dynamic leadership diploma from Harvard Business School. Alongside, then I received some really amazing experiences from some of the best companies in the world. I started my journey with Siemens Engineering. Then I moved to Marriott International. From there, then I moved to defense industry, Lockheed Martin. They are the manufacturers of F-16, which is popular in Pakistan. And from there, in Denmark, then I was lucky enough to get into the UN headquarters there. I worked for UNICEF for 7 years,
which gave me an amazing experience, followed by the infrastructure for 80 countries. That gave me a real global perspective on technology and the challenges around that. And followed by my engagement with the Aga Khan Development Network. I was the inaugural Chief Information Officer of University of Central Asia in Central Asia for 3 years. And University of Central Asia operates in Kyrgyzstan, Tajikistan, Kazakhstan, and Afghanistan. And after spending 3 years, from last 3 years, I have been blessed to be the Chief Information Officer for the Aga Khan University. And we are operating in 6 countries: Pakistan, Kenya, Tanzania, Uganda, Afghanistan, and United Kingdom. We have around 36,000 users across, with 7 hospitals, 350 healthcare centers, and we have university operations in all countries actually, with our campuses, with a lot of world rankings within the AKU. We are the top JCIA accredited system across our hospitals, which is the highest quality accreditation in the world. And also with regards to our medical college, we are in the top 100. We have a lot of other awards as well. So it's really a player working in these institutions. Great, fantastic. So, can you share some examples of the role of data analytics and artificial intelligence in driving decision making in healthcare? And how can we make the transition from being data rich to data driven? And I think that's very important, because when you're data driven, that's how you drive your decision making as well. And most importantly, how to break down the silos in the healthcare system so that data is integrated seamlessly. Yeah, I think it's a great question, and this is the basis for healthcare now and for the future as well. So data analytics and the entire AI part of it starts with the policies. It starts with the willingness to implement these ones. So I think with in the context of Aga Khan University, within my technology area, we have data in global data analytics division, and then we have data science within it, data security within it, and then we do AI based on all the data we have around these functions. So I think what is important here is that all these digitalization, the important part is that how are we accessing this data, how are we managing this data, and what is the quality of data we are receiving. And based on that quality and based on that centralized single source of truth, then it's enabling us to do the future decision driven strategies. Within the context of Aga Khan University, we are investing actually significantly, and I'm happy to actually share that as of now, as we speak, Aga Khan University is investing the largest digital transformation project in the history of our institutions in the last 40 years, which is the multi-continental implementation of electronic health record. And the overall driver of this entire electronic health record in two points. One is of course the to improve the patient safety, but the second one is to enabling research part of it. And when I'm saying enabling research, this is all about data, how we are gathering data, how we are polishing data, and how we are using data for future trends. So I think the basis for any digitalization, and as you mentioned, data rich to data decision part of it, that comes from the quality of data, that what is the source of data, how you are managing that data, and what is the mechanism to use that data in terms of building trends. For example, in our part, we use data for trending for different ethnic groups, with different geographic groups, with different age groups, and that gives us what's happening in certain parts of the country compared to the global outlook of this one. So I think overall, the importance of data and then the parameters around data is very very significant, and is the success driver for any healthcare institution. So, can you share some examples, for example, how data analytics and AI can, let's say, reduce waiting of patients in the hospital, or how it can help in
resource optimization, or how it can help with better and earlier diagnosis so that treatment options are advised timely. Can you share some examples around Yeah, those? absolutely. I think there are three questions you asked in one question, so I will just go one by one. With regards to the overall data analytics part of it, data analytics gives you the if I will just go with the Aga Khan University's example, we are using data analytics in multiple areas. For example, we are using data analytics on decision support systems. We are using data analytics for our 5-year plans based on what we have learned within the patients within the entire ecosystem of technologies within our system. And then we are using the data analytics for preparing our capacity for our future as well, that what are the trends we are receiving, where we need to invest, where we need to focus. As I mentioned, the current project, electronic health record, this will enable us to, this is the first time we are doing in Pakistan. We have just implemented the electronic health record in Nairobi, in Kenya, our hospital, and 50 outreach centers. And as we speak, we are implementing in Pakistan. And this is one of the state of the art electronic health record systems. This will not only enable Aga Khan University, this will also enable the healthcare system in Pakistan to come and learn and benefit from this experience of how we are managing data. And the biggest driver is built-in AI part of it, built-in data analytics part of it, and then the information security around these things. So, can you share an example of the built-in AI part of it, some applications of that, and how it is used to Yeah. improve outcomes? For example, I can share ECFA PACS is one example from the radiology information system. In ECFA PACS, what happens is that with the current versions of ECFA PACS, when a scanning is done, then based on that, it gives a lot of there is a intellectual experience of that ECFA is already there, right? And then when a radiologist sees the report, the radiologist also gets the hints of how this looks based on the database, based on the data it already has, based on its experience. And that gives the hint that it may be this is the disease or this is the areas. But of course, the ultimate decision making is the radiologist, the expert who take care of all the built-in information, built-in signals towards that decision, and then read. So it gives an additional support for our experts to think about their decisions. And it also sometimes it also endorses their decisions, that what they are thinking is also AI is taking, because AI is coming from millions of data sets. Yeah. And based on that, it gives that reporting. So I think in the healthcare system, this is an ever increasing area, because in all these areas AI is used. I will give you another example. We are using electronic health record in our hospital in Nairobi. For example, a patient has a certain type of disease and certain type of allergies. Let's suppose take any acute disease, and for example, a doctor gives certain medicines to that patient with the number of doses, and forgets about considering the allergy part of it, right? The system automatically detects that and then alerts the doctor that, by the way, do you know this patient has, in addition to all these diseases, this patient has these allergies as well. Have you Yeah. considered that? This is Yeah. dangerous that you are giving this many doses with this allergy. So it directly relates, all this information is directly relates with the patient safety point of view. And that really helps to minimize the human judgment error, especially when it comes to medicine, because obviously drugs have contradictions as well. Yeah, and we call it in the healthcare domain, we call it near miss opportunities, right? Near miss opportunities. For example, if all those human errors are absolutely reduced, and at the same time it brings a lot of transparency, because Yes. all that data is in front of you on a real time basis, you can access. For example, now, as of now, at our hospital, if we want to see a patient, if a doctor wants to see a patient, then his or her
folder comes from our health information management system. Beforehand, there is a mechanism running, and then that folder is there with notes and all those things, right? When we implement the electronic health record, it's an end-to-end digitization. The doctor has in one click the entire history is there, right? It's not only it will not only improve the entire efficiency, it will also reduce a lot of those human errors, and it gives the full visibility to the doctor about the past, about the allergies, about what has happened, and then based on that they can do whatever decision or diagnosis they will do with an informed decision for that patient. And that's very, very important, because I think where things go wrong, as you mentioned, the near miss opportunities is because of the human judgment errors. uh, can you share some examples of how AI and data analytics, especially AI, can be used to cut down patient waiting time in hospitals? Is there some implementation of work being done around that? Yeah, I will give you a couple of examples. Now, if any of you can just on WhatsApp message the Aga Khan University number, Yeah. just message, yeah? You don't need to call anyone. Through our boards, you will see, okay, which doctor you want to get the appointment, what is the available timelines for that, right? Without noticing anyone, without calling any number, right? On WhatsApp, you can fix your appointments, right? We have a family hifazat app, right? Yes, I use Family that. hifazat app Yes. with all over Pakistan, right? What we have done is that instead of us controlling the data of all the patients, we give control to patients about their data, right? The example is that recently, because my family is in Denmark, so my mother was visiting me in Denmark, and she got ill, and there we had to go to the hospital. When we went to the hospital, it was really easy for me to show them from family hifazat the history of entire her medical records, and that helped the doctors there to diagnose what they can prescribe for her, right? And many of our parents, many of our family members, when they are traveling around the world, if they have the proper digital electronic system and digital record, then they can use not only that in Pakistan but also from other parts of the world. And that really helps to improve accessibility of data across different countries and or different area geographic locations as well. So no matter where you are in the world, or whoever doctor you're visiting across the world, if you have it at the click of your phone, I mean, that's really important. Yeah, exactly. And then what this family hifazat is all about, right? From that app, you can see all the diagnostic, all the images from radiology, right? All the lab tests, right? And then you can also engage your consultant. You can book your appointment. You can pay your fee. So you don't need to interact with a human to do all these things. You don't need to visit hospital or other centers to get your reports. It's available all the time on your mobile phone. सो एक मसला जो लोगों को काफ़ी आता है यहाँ पे, एंड आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस इट एज वेल, कि अगर हमने किसी भी पेशेंट को शिफ्ट करना होता है फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अनदर, तो उनका जो सारा इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड जो होता है उसको शिफ्ट करना काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज डिफरेंट हॉस्पिटल्स किस वक्त डिफरेंट सिस्टम्स पे ऑपरेट कर रहे हैं, कहीं मैनुअल है, कहीं डिजिटलाइजेशन है, कुछ जगह से कुछ नोट्स एक फाइल में आके वो हॉस्पिटल में दिए जाते हैं. सो व्हाट आर योर सजेशंस फॉर दैट हाउ कैन वी बेटर इंटीग्रेट द ट्रांसफरेंस ऑफ EMR अक्रॉस हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान? या बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आई वुड लाइक टू गिव सम एग्जांपल्स ऑफ दैट. इस वक्त केनिया में क्या हो रहा है, केनिया की गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है कि आप हॉस्पिटल प्रैक्टिसेस तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक आपके पास इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड ना हो इंस्टॉल. ठीक है, और उसका बेनिफिट दे रहे हैं टैक्स में हॉस्पिटल्स को कि आप इंप्लीमेंट करें, बट हियर आर द बेनिफिट्स फॉर यू, राइट? जब तक पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह के पॉलिसीज और इंसेंटिव्स, रिमेंबर पॉलिसीज विद इंसेंटिव्स, कि आप इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो इंप्लीमेंट करना मस्ट हो हर हॉस्पिटल के लिए, और उसके इंसेंटिव्स हों जितने भी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से विद रिगार्ड्स टू टैक्स, या जिस तरह के भी इंसेंटिव्स हो सकते हैं,
जब तक हर पाकिस्तान का हॉस्पिटल इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड यूज नहीं करेगा, दिस वुड बी ए बिग प्रॉब्लम। बिकॉज अभी ऑफ कोर्स आगा खान यूनिवर्सिटी में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ पे। अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है लाहौर से, कराची से, और कराची के किसी और हॉस्पिटल से, या इवन आई एम फ्रॉम गिलगित, गिलगित से कोई होता है, पेशेंट आता है, ठीक है, ऑफ कोर्स वो अपने साथ वो प्रिस्क्राइब लेके आते हैं, क्योंकि सिस्टम्स बहुत कम हॉस्पिटल्स हैं जो अभी आहिस्ता से ट्रेंड हुआ है, लेकिन फिर भी दे जो द स्पीड इज नॉट एज मच एज वी डिजायर। बट आई थिंक पॉलिसीज जब तक गवर्नमेंट इंश्योर नहीं करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड इज नॉट लाइक यू चूज इट, इट्स ए मस्ट पॉलिसी टू हैव with supported by incentives, that here are the incentives, और कन्विंस करें, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप्स करें, ठीक है, तो तब तक हम इस फ्लो को नहीं निकाल, और उसके हम एक बेसिक डिनोमिनेटर कहें कि भाई दिस इंफॉर्मेशन हैज टू बी देयर इन द इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, because electronic health records can be very advanced and very basic as well, right? From the government point of view, recently we had a health tech summit at AKU, where Prime Minister was the chief guest, and one of my recommendation was the implementation of electronic health record in government hospitals across Very Pakistan, important. right? Across Pakistan, because हम देखें प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास पेशेंट आते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम पेशेंट है कहाँ जाते हैं? मैक्सिमम पेशेंट जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, ठीक है। जब तक वहां पे हम इम्प्लीमेंट नहीं करें गवर्नमेंट लेवल पे, आई थिंक दिस वुड बी जस्ट अ विश फॉर अस। सो माय रिक्वेस्ट विद द पॉलिसी मेकर्स दैट दे नीड टू थिंक अबाउट दिस वन, बिकॉज ये याद रखें कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिर्फ प्रोसेस फ्लो आपको नहीं दे रहा, डेटा दे रहा है, इतना ज्यादा मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डेटा आपको दे रहा है। इस वक्त दुनिया के साथ हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है? मसला एआई की आपने बात की, व्हाट इज द बिगेस्ट इशू? The biggest issue is that all these AI algorithms are based on North American, European, and developed countries data. That is very ethnic difference is there. और हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस सोसाइटी में? तब तक हम कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते जब तक हमारे पास सिस्टम्स हों जो एक्सेप्टेबल डेटा जनरेट कर सके। And I think that's the point that you like rightly identified, because I remember that when I used to work search for demographics of different countries, I used to see all the countries except for Pakistan on which data sets like Euromonitor, which has data of all the countries available, no matter what sector you're choosing, whether it's healthcare, whether it's consumer goods. But Pakistan ka, when you would search for Pakistan, there would be hardly any data. And I think for us to be enabled to use AI, it's very important to first start collecting data so that we can start generating those insights. Yeah, exactly, and that is the जब भी मैं बात करता हूँ, for example, I interact with Google, Microsoft, and a lot of companies, और हम कुछ चीज़ों में हम collaborate भी कर रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो potential है, now we have Chat GPT, right? Everybody understands that. Okay, so what is the potential for improvement? Potential for improvement is diversified data, and diversified data not only for South Asian population, African population, right? All those ethnicities who are significant in numbers, right? जब तक उनका डेटा हमारे पास नहीं होगा, और तमाम जो हमारे पास सेंट्रलाइज्ड डेटा वेयर हाउसिंग है उसमें उनका डेटा शामिल नहीं होगा, जो हम आंसर्स होंगी उनकी एक्यूरेसी, वी कैन नॉट गो बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल, एंड इट विल नॉट बी रेलेवेंट। तो यहाँ पे देखें ना, हमारे पास जो हमारे टेक कंपनीज हैं या हमारे पास जितने भी स्टार्टअप्स हैं, सबसे बड़ा उनके लिए मौका ये है कि वो इन चीज़ों को इनेबल करें। That is true. ठीक है, इन चीज़ों को इनेबल करें। And surprisingly, I see very few companies actually working on data collection and more working towards, using whatever scraps of data that they have. And I think one of the barriers is that it will create more transparency and somewhere along the lines accountability as well. That's one barrier I feel towards data collection, even in the healthcare system. Yeah. What barriers do you see that why is data not being collected? देखिए, जब भी हम डेटा कनेक्शन या इस तरह के सिस्टम्स की बात करते हैं ना, कुछ बेसिक्स आ जाती हैं। यू नीड द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट्स, you need the required willpower from the people who do decisions, right? You need the right capacity who can implement and work on these things. You need the right education for the public.
बिकॉज हमने इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड उधर इम्प्लीमेंट किया. इट्स अ लॉन्ग एंड वेरी पेनफुल प्रोसेस, बिकॉज आपको सारा जितना भी आपका सिस्टम है उसको पहले एनालाइज करना होता है कि आपकी क्या प्रोसेसेस हैं, ठीक है, एंड देन implement those best practices about what needs to be changed. और इट्स नॉट ईजी. आपने अपने डॉक्टर्स को, नर्सिस को, पैरामेडिक स्टाफ को, सबको कन्विंस करना है, उनको ऑन बोर्ड लेना है, नंबर वन, राइट. आपने रिक्वायर्ड फंडिंग लेनी है अपने इंस्टीट्यूशन से, आपने पॉलिसीज के साथ अलाइन करना है, और फिर आखिर में आपने इसको रेलेवेंट बनाना है ताकि वो यूज कर सके, और फिर पब्लिक को एजुकेट करना है ताकि वो बेनिफिट ले सके इससे. सो देयर आर मेनी पार्ट्स of this puzzle, and I think the important part is that the direction should be right. पहले ना एक डायरेक्शन होनी चाहिए, और उसमें तमाम, और ये डायरेक्शन कैसे आएगी उसी वक्त आ सकती है जब देयर इज ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. And I think that's the basis of everything that needs to be done to bring reform in the healthcare system, the public private partnership. uh, and I think that brings me to my next follow-up question. What recommendations do you have that are necessary to bring about this public private partnership, and what would you suggest in terms of public reform, so that we can improve existing healthcare infrastructure? So I think there are a couple of basic things, right? I always say that dream big, back to basic. We have to first, of course, dream big. We are good in dreaming big, but I think where we are lacking is that we are lacking in implementing basics. Basics is that you need to have the right people on the right job. Okay? Yeah. जितनी भी हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अगर हम सही प्रोफेशनल्स को उनके जगहों पे ना रखें और एम्पावर नहीं करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू सक्सीड. That's ये true. जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, आपको एक एग्जांपल देता हूँ. आई रिप्रेजेंट आगा खान यूनिवर्सिटी. आपके पास नस्ट है, आपके पास लम्स है, ठीक है. ये जो इदारे हैं जो मजेदार, जबरदस्त, आप भी चाहेंगे, मैं भी चाहूंगा हमारे बच्चों को हम उधर भेजें. हम सब चाहते हैं ना पूरे पाकिस्तान में. That's true. एवरीबॉडी वांट्स दैट. Why these institutions are well known and why these institutions are keep doing good job? Because they don't compromise on merit, they don't compromise on quality. ठीक है. इसी मुल्क के अंदर हम लोग ये एक्सपीरियंसेस करते हैं, इसी मुल्क के अंदर. तो इसका मतलब ये है कि इस मुल्क में कोई मसला नहीं है, मसला है इंस्टीट्यूशन चलाने वालों के सोच में. ठीक है. अगर हम किसी अच्छे इदारे को इस मुल्क में हम किसी अच्छे इदारे को इस्टेब्लिश करें, उसको अगर चलाना चाहें, चला सकते हैं. And you have examples within the country. I'm giving you examples of the country, right? And but if you don't have the willingness to establish and implement something, then of course you can find millions of excuses. So basic ये है कि आपके पास willingness होनी चाहिए. Basic ये है कि राइट बंदे को राइट जॉब पे आप लगा दें, फिर उनको एम्पावर करें. सिर्फ जॉब पे लगाना नहीं है. ट्रस्ट देम, let them do their job and give listen them to the those funds. people. ठीक है? Yeah, of course, funds, trainings, right? Engagements. क्योंकि ये ऐसा प्रोसेस है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं से भी पढ़ के आया हूँ, तो मैं हर उस तमाम चैलेंजेस को अकेले बैठ के उसके सोल्यूशन नहीं ले सकता हूँ. There should be a network of collaborations. On government level पे, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर के टास्क फोर्स हैं. मैं जब मेंबरशिप्स देखता हूँ तो दे आर सम अमेजिंग पीपल, बट दैट्स रिप्रेजेंट्स सॉफ्टवेयर हाउसेस, स्टार्टअप्स, इस तरह के लोग. वेयर आर एक्सपर्ट्स? That's true. Where are strategic people who can come and give you the strategy of how to drive this? Yes, all these startups, all these software companies, they are good people, they are contributors, but where are your strategist people? So I think that's where we are lacking. We need to find the right people. We need to engage the right people. We need to bring confidence within this community of intellectuals, and then take the leverage their experiences. And what are your thoughts about the quality of education and training when it comes to the healthcare industry? Because I think that's also the key driver of any innovation in healthcare. So we have Aga Khan University, it's a leading name in providing quality education. Then we have the Aga National. We have a couple of other great institutions as well.
but these are again medical colleges. What about, training nurses and paramedics and other support staff in the healthcare system? What are your thoughts on their quality of education? So I think I just want to mention one number, right? When Aga Khan University started its School of Nursing, it Mm-hmm. was the first and only private school of nursing in Pakistan, right? Now we have around 65, 66 School of Nursings in Pakistan. Out of that, 56 are headed by our students, AKU students. The important part is that जो इनकी रजिस्ट्रेशन होती है इंस्टीट्यूशंस की, उस मैकेनिज्म को देखने की ज़रूरत है, ठीक है? ताकि देखें ना, कोई भी इदारा अगर आप स्टार्ट करते हैं, देयर आर कपल ऑफ रिक्वायरमेंट्स, प्री रेक्विजिट्स, राइट? उसके अंदर सिर्फ बिल्डिंग नहीं होती, Yeah. उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और ख़ास तौर पे उसके अंदर होता है ह्यूमन कैपिटल, ठीक है? कि आपके पास ट्रेन फैकल्टी अवेलेबल है, आपकी जो करिकुलम है वो किस बेसिस पे है, what are the basis of developing your curriculum, and who is developing your curriculum, and what is the authenticity of that curriculum, and who is executing that curriculum, ठीक है? और फिर जो हेल्थ केयर की बात आती है, तो उसमें याद रखें कि हेल्थ केयर में सिर्फ मेडिकल स्कूल या नर्सिंग स्कूल का होना ज़रूरी नहीं है, साथ हॉस्पिटल्स का होना ज़रूरी है, ताकि वो नर्सेज जो पढ़ रहे हैं वहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सकें। अभी रिसेंटली हमने पाकिस्तान में, आपने सुना होगा, किर्गिस्तान में स्टूडेंट्स के साथ बहुत मसले हो रहे थे। किर्गिस्तान, आई हैव स्पेंट 3 years देयर। वहाँ पे 12,000 पाकिस्तानी बच्चे वहाँ पे मेडिकल एजुकेशन ले रहे हैं। And I really urge to all parents to double think before sending their kids to those type of places. मैं बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे मैं गया हूँ, वहाँ पे वो पढ़ाते हैं, लेकिन देयर इज़ नो हॉस्पिटल फैसिलिटी, क्योंकि वो सस्ते होते हैं, आसानी से एडमिशन मिलते हैं। आप 4-5 साल बाद डॉक्टर लिख सकते हैं अपने नाम के साथ, तो वो आप भेज रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि यू आर रियली a good addition to the society. So I think the important part is all these different parameters of building infrastructure, curriculum, right faculty, right delivery of mechanism, and at the end of the day, हमारी जो PMDC या हमारी जो nursing councils हैं, of course they are one of the best in the world, these institutions, but we just need to keep improving our mechanisms around that. That is true. And I think once you get these basics or the fundamentals right, only then you can drive further innovation within the healthcare industry as well. So, another subset, I would say, of innovation in healthcare or a category is telemedicine. Telemedicine is gaining a lot of momentum across the world and it is being utilized efficiently. But Pakistan में मुझे लगता है कि अभी भी adoption to telemedicine के अभी भी काफ़ी barriers हैं. And one of them is digital literacy. So जिन एरियाज में जिन इंडिविजुअल्स के साथ डिजिटल लिटरेसी इज वी हैव लिमिटेड डिजिटल लिटरेसी, वहाँ पे हम what can we do to make telemedicine more accessible and encourage them to use telemedicine? I think it's a very important question. और उसके भी कुछ, there are some prerequisites for this one, right? For example, telemedicine is a digital platform we are talking about, right? पाकिस्तान के हिसाब से, I am from गिलगित बल्तिस्तान, okay? वहाँ पे हमें बिजली का मसला है, ठीक है? 18 घंटे, 15 घंटे बिजली नहीं है। Forget about internet and all those things, ठीक है? Now it's improving, gradually we are improving. Internet चाहिए होता है, prerequisites, right? You need to have the electricity, you need to have the internet to use these platforms. उसके बाद आता है आपकी accessibility. For example, ये जितने भी telemedicine की companies हैं, उनका सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हाउ इजी दोज प्लेटफॉर्म्स टू यूज। हमारी जो पॉपुलेशन है, माशाल्लाह 110 मिलियन पाकिस्तानीज आर डिजिटली लिटरेट। we are one of the very high end digitally literate nation because of our youth population, ठीक है? लेकिन जो हमारी दूसरी जो डिजिटल लिटरेट नहीं है, उनको कैसे इंगेज किया जाए? उनको इंगेज किया जाए बाइलिंगुअल ऑप्शंस के साथ, उनको इंगेज किया जाए बड़े बड़े, इंस्टेड ऑफ अ लॉट ऑफ टेक्स्ट, अगर हम बड़े बड़े बटन डाल दें तो सिंपल टू यूज़ वाले बटन, उनके थ्रू वो इंगेज हों और कम से कम स्टेप्स पे वो कनेक्ट हो सकें डॉक्टर। लेकिन फिर वही है कि बेसिक है हमारा इंटरनेट, बेसिक है हमारा
बिजली, ठीक है। अभी बहुत सारे कंट्रीज गवर्नमेंट ये अनाउंस करती है हर साल के हिसाब से, ठीक है, अनाउंस करती है कि इस साल हमारी 50 मिलियन की, 30 मिलियन की, 20 मिलियन की पॉपुलेशन को फाइबर अवेलेबल होगी, ठीक है। आई रियली लव टू सी द सिचुएशन इन पाकिस्तान। लेकिन ये एक एरिया है जहाँ पे हम इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़े टेक कंपनीज हैं, उनके साथ गवर्नमेंट लेवल पे कोलैबोरेशन करके ये जो इंटरनेट एक्सेस है, स्पेशली फाइबर एक्सेस अगर हम दे दें, ठीक है, अपने जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव करें, ठीक है, देन यू हैव द फाउंडेशन फॉर रनिंग all these digital or tele or or whatever you call it, right? And then you build those things. लेकिन ये कि अगर आपके पास फाउंडेशन है, then it's a matter of how easy to use these ones. मैंने कहा फैमिली हिफाजत है, फॉर एग्जांपल एक यू का, we have tried our best to put make it very user friendly, and alhamdulillah we are receiving a lot of good feedback. और हमारे operations तकरीबन 126 सिटीज़ में पाकिस्तान में हमारे फेलोबॉटमी सेंटर्स हैं, और जो भी वहाँ एंटर होता है दे आर ऑटोमेटिकली रजिस्टर विद फैमिली हिफाजत। अब सेहत कहानी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसी तरह आपके पास मरहम है, बहुत सारे टेली हेल्थ के यहाँ पे एप्स हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इम्प्रूवमेंट की, और फ्रॉम बोथ एंड्स। वन इज़ the people require infrastructure to access, the companies require to make it more user friendly. And what about that psychological जो हमारा एक mindset barrier है, that we rather go to the doctor physically rather than use a telehealth service? What about that, and how do we overcome that? It's of course a psychological part, लेकिन कोविड से पहले ऑफ कोर्स मैं आपको एक छोटा सा डेटा बताता हूँ कि टेली मेडिसिन का जो मार्केट था दुनिया में, वो कोई 80-90 बिलियन डॉलर्स का मार्केट था प्री कोविड, ठीक है। Alright. अब अगर हम बात करेंगे, हम ट्रिलियन से ऊपर बिलियन डॉलर्स की मार्केट है। So it went exponentially up, this entire market. Why? The reason is that कोविड ने जो हमें एहसास दिलाया कि ज़रूरी नहीं कि आप सामने जाके इलाज करा सकते हैं, you can use all these remote tools to connect with your consultant, to connect with your diagnosis. उसकी वजह से acceptance काफ़ी हद तक आई है। ये नहीं कि 100%, it's not the 100% जो आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप उनसे कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है सेकंड ओपिनियन प्रोग्राम आगा खान यूनिवर्सिटी में। व्हाट इज़ दैट? सेकंड ओपिनियन प्रोग्राम इस तरह है कि पाकिस्तान के किसी भी हॉस्पिटल में आप इलाज करा रहे हैं, ठीक है, यू हैव ए सर्टेन डायग्नोसिस, उसमें से 4-5 बेसिक इंफॉर्मेशन के थ्रू आप AKU के किसी कंसल्टेंट से सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, एंड इट्स ऑल ऑनलाइन। ठीक है, इट्स वर्किंग इन पाकिस्तान। सो किसी भी हॉस्पिटल में आपका इलाज हो रहा है, यू नीड ए सेकंड ओपिनियन, राइट? यू जस्ट नीड योर नेम, योर ईमेल, योर बेसिक इंफॉर्मेशन टू create your account, and then upload your reports, which can direct you to the relevant consultant at the Aga Khan University, and then they can give you their view of what this could be. So important ये है कि हम लोग सारे, हम AKU हो या कोई भी इदारा हो, ठीक है, हम लोग सारे we are learning not only within the country, we are learning from across the board, from दुनिया के जो बड़े बड़े इदारे हैं उनके साथ हमारे कोलैबोरेशंस हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ हम कोलैबोरेशन करते हैं, और उसमें देखते हैं कि क्या हमारे लिए रेलेवेंट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। So, with the rising cost of healthcare, obviously healthcare needs to be more accessible, and across the world हमने देखा है कि people offer healthcare insurance. However, पाकिस्तान में ये trend अभी भी इतना common नहीं है. So, why do you advise that healthcare insurance is important, and whether individuals or companies they should go for it? I will share some interesting facts here, because we operate in Pakistan और हम लोग केन्या में भी ऑपरेट करते हैं। केन्या में जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, 80-90% आर फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज, क्योंकि वो 80-90% पे होती है इंश्योरेंस के थ्रू। पाकिस्तान में जो पेशेंट्स आते हैं, 80-90% कैश या कार्ड के थ्रू, जो अपने पर्सनल जो बेयर करते हैं कॉस्ट को, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे तो हेल्थ इंश्योरेंस है। अब
हेल्थ केयर जो एंटिटीज़ हैं, सिस्टम्स हैं, हम लोग हैं, फिर आगा खान है, या जितनी भी हॉस्पिटल्स हैं पाकिस्तान में, इनको आगे आना चाहिए इंश्योरेंस कंपनीज के साथ कोलैबोरेशंस में, ठीक है, प्रोडक्ट्स, ताकि लोगों को वो ईज दे सकें कि कम से कम पेमेंट पे कैसे वो अपना हेल्थ इंश्योर कर सकते हैं। आज की दुनिया में अगर किसी भी पेरेंट्स से पाकिस्तान में आप पूछें कि दो बड़ी उसकी ख्वाहिशात क्या हैं, या पैसा उसको दो बड़ी चीज़ों के लिए क्यों चाहिए, वो हमें कहेंगे एक उनकी हेल्थ के That लिए is true. चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड इट Hmm. इज़ एन एक्सपेंसिव डील। द सेकंड वन इज़ एजुकेशन, ठीक है, अपने बच्चों की एजुकेशन की, अगर उसके लिए हमारे पास मैकेनिज्म्स हों, थ्रू पार्टनरशिप, अगेन थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, ठीक है, थ्रू डिफरेंट हेल्थ कार्ड स्कीम्स, in some previous governments there were some health card schemes. If those schemes can be looked at on a broader level, on a nationwide, I think that can, जो कहते हैं ना कि सिटीजन्स को सर्व करने का अगर गवर्नमेंट का इरादा है, तो दीज आर द टू प्लगइन्स, एजुकेशन कार्ड्स और हेल्थ कार्ड्स अगर दें, कि आप फॉर एग्जाम्पल एक गरीब बच्चे को अगर आप एजुकेशन इंश्योरेंस दें कि आप जहाँ भी जाएं, ठीक है, हियर इज़ योर एजुकेशन, दिस इज़ द फी वी कैन पे इफ़ यू गेट टू द एडमिशन टू एनी यूनिवर्सिटी, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है Yes. माशरे के लिए, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे लोगों के लिए। इसी तरह हेल्थ, तो अगर ये दो चीज़ें, बाकी हम बड़ी बड़ी बातें ना करें, सिर्फ बेसिक्स पे आके इन दो चीज़ों को हैंडल करेंगे ना, वी विल गो प्रीटी फार। And I think that's you know healthcare, education. I mean, even if you look at sustainable development goals as well, I mean, access to clean water, I mean, these are some of the basic goals, I think, which most of the countries are like striving for. um, that brings me to my next question as well. Okay, in terms of educational technology, also you have done a lot of work across different countries. Would you like to share some experiences and probably an example of how transformational that has been? तो जिस तरह हम टेलीमेडिसिन की बात करते हैं कि व्हाट टेलीमेडिसिन गिव्स, दैट टेलीमेडिसिन गिव्स थ्रू टेक्नोलॉजी, इट enables you to access, right? That's the basic thing with tele or e thing. Similarly for education as well, ठीक है, जो एड टेक हम बात करते हैं, पूरे जो टेक्नोलॉजिकल जो इसमें पूरा पैराडाइम है, उसका मतलब ये है कि हम एक्सेस कैसे इंश्योर करें within the context of AKU. We have a really big e-learning platform, ठीक है, हमारे पास कोई 60-70 हज़ार लोग हमारे जो ई प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे रजिस्टर हैं, कोई 20-25 हज़ार ईयरली दे आर एक्टिव स्टूडेंट्स वी हैव across the board, ठीक है, और वो हम जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स पे मैं अभी AKU के हवाले से हम हंड्रेड्स ऑफ कोर्सेज एवरी ईयर वी पुट दोज ऑनलाइन, राइट, और वो हम ऑफर करते हैं बहुत सारी जगहों में, और इनमें भी जितना जितना आपने टेलीमेडिसिन और उस पूरे एरिया की हमने बात की, उतना ही स्कोप यहाँ भी है, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे एजुकेशन सिस्टम है, उसको पूरा रीवैम्प करने की ज़रूरत है कुछ बेसिक्स के साथ, और वो बेसिक्स देखिए हर जगह में बहुत अच्छे टीचर्स नहीं मिल सकते आपको, That is true. you just need to leverage technology to bring that voice, bring that knowledge to the respective audience, right? Recently हमने कॉन्फ्रेंस किया था पाकिस्तान में, कॉन्फ्रेंस किया था इन केनिया, हमारे पास कोई 50-60 के करीब इंटरनेशनल जो स्पीकर्स थे, इंक्लूडिंग द इन्वेंटर ऑफ इंटरनेट, इंक्लूडिंग द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ एस्टोनिया हु हैज़ डिजिटली ट्रांसफॉर्म द इंटायर Yes, नेशन, in राइट? Estonia has been an और example. बहुत सारे लोग हमारे पास, हार्वर्ड के CIO, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के CIO, ये सब लोग आए थे यहाँ पे, कुछ लोगों को हम यहाँ ला सके थे, कुछ लोगों को हमने कनेक्ट किया था डिजिटली, so their message was heard here, the audience, how we benefited through these technological means. तो इसी तरह अगर फार फ्लंग एरिया में भी कहाँ जहाँ पर अगर आपके पास फाइबर हो, आपके पास बिजली हो, आप उसी हार्वर्ड के CIO को सुन सकते हैं, ठीक है, आप उसी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का जो लिटरेचर है वहाँ पहुँचा सकते हैं, आप आगा खान यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी है उसकी बात वहाँ भी सुन सकते हैं, बेनिफिट कर सकते हैं, जो यहाँ पे नस्ट है या लम्स है, IBA है, जितने भी टॉप के इंस्टीट्यूशंस है, NED है, यू नेम इट, राइट, they can expand their access through these technologies.
वो ऑफर कर सकते हैं फ्रीलांस कोर्सेज, बेसिक कोर्सेज, तमाम जो हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं उनको एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स ऑफर कर सकते हैं। इन तमाम में हमारे पास आता है एडटेक का काम। तो पाकिस्तान के हिसाब से बहुत सारा हमारे पास पोटेंशियल है, सिर्फ अगेन राइट इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट टैलेंट Yes. एंड राइट विजन, दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड। हम हमारे पास यहाँ पे आगा खान हॉस्पिटल कराची और आगा खान हॉस्पिटल नैरोबी हमारे पास सिमुलेशन सेंटर है, ठीक है। और ये स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर है पाकिस्तान में। दिस इज द ओनली सेंटर वेयर थ्रू रोबोटिक, through simulation you can do the patient experience. For example, robots के through हार्ट अटैक होता है, Hmm. और फिर वो उसकी जो जितना भी रिस्पॉन्स है, उसकी इंटरटेनमेंट है, डिलीवरी है, फॉर एग्जांपल डिलीवरी के मरीज़ हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्रॉनिक जो इलनेसेस हैं, ठीक है, वो हमारे पास सिमुलेशन सेंटर है जहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के लोग आते हैं, आके देखते हैं और फिर उनसे सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क में आपके पास ऐसे इदारे मौजूद हैं अगर उनसे बेनिफिट लेना चाहें। So, I would like to thank Mr. Shaukat for joining us today. बहुत कुछ हमें इनसे सीखने को मिला, बट जो प्राइमरी जो हमारी लर्निंग है और टेक अवे है फ्रॉम दिस इंटायर सेशन इज दैट जब तक हमारे बेसिक्स दुरुस्त नहीं होंगे, फ्यूचर इनोवेशंस पे काम करना मुश्किल हो जाएगा। सो विच मीन्स के इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी अक्रॉस द एंटायर कंट्री, सीमलेस इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हेल्थ केयर इज़ अ बेसिक इंडिविजुअल नीड फॉर एवरी पर्सन। और जब तक गवर्नमेंट अपने इनिशिएटिव्स के साथ सपोर्ट नहीं करेगी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करके कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ले आए। सो आई थिंक दैट इज़ द की फॉर द हेल्थ केयर रेवोल्यूशन टू टेक प्लेस इन पाकिस्तान। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, इसके हम एआई की तो बातें बहुत करते रहते हैं, बहुत सारे टॉक शोज हो रहे हैं कि एआई ये कर रहा है वो कर रहा है, इवन विद इन पाकिस्तान। बट आई थिंक जो एक क्रिटिकल पॉइंट which is being missed is that for AI to actually work we need data sets, एंड डेटा सेट्स की जो कलेक्शन है इस वक्त पाकिस्तान में वो बहुत लिमिटेड है। सो दिस इज एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी for businesses and companies to start working on collecting data so that these AI algorithms can work better and can actually serve the community in the way it is needed. Thank you. I really want to appreciate Smart Benefits for actually for this amazing initiative, because this is not only about working in their softwares in selling their products. It's giving back to the community as well. Through these discussions, it gives the opportunity where people can come, like today I got an amazing opportunity to share my thoughts, and I'm sure that you continue these sessions with a lot of amazing people which ultimately benefit the society. So thank you very much.